Hello friends, my name is Priyavrat Mishra and you all are watching me on your favorite channel ooltasoch. मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट किछि दिन आमर चलिबो कोन ना सब क्वेश्चन आंसर सीरीज गुड़िक चलिबो एपर्यंत आम जिते भी सब वीडियो करिछि बहुत थोड़ा रिक्वेस्ट आसे कि क्वेश्चन आंसर पे स्पेशल वीडियो करंतु with PDF one. So instead of doing the PDF one मु आपण मान को ऑनलाइन रे हमर वेबसाइट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखैबी एवं बुझेबी. सो आज हम जिबा प्रथम विषय जो अछि माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ताकू देखिबा. होप वीडियोटी आपण मान को हेल्पफुल हबो. यदि हेल्पफुल हबो निश्चित भाव कंसीडर करिवे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सो वी वोंट मेक लेट एबे जिबा क्वेश्चन आंसर को कहार ना माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो. सो माय डियर फ्रेंड्स अपनी वेबसाइट रे सब ऑलरेडी अपलोड अछि माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बाय जेसी वेंस. यूनिट 1 रो जिबा क्वेश्चन आंसर यदि आपण माने जो माने देखि नाहंती बा यूनिट 1 को बुझी नाहंती पर्यंत डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि ताको क्लिक करिकि यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 आपण पढंतु. राइट. So now the first question is, why were nationalistic feelings running high during the 1936 Summer Olympic in Berlin? Nationalistic feeling काहे की 1936 Summer Olympic Berlin बेले को बहुत हाई थिला. कौन लिखिबा? No, Hitler had whipped up extreme jingoism in Germany, declaring that Germans, because of their Aryan lineage, were inherently superior to other races on earth. Such air of German supremacy pervaded the 1936 Olympic. आगु जब हिटलर कौन करतले ना कही देथिले पिलाली हिसाब रे कि जर्मन लोक माने जो मन को नॉर्मली आर्यन को जाए से माने होचंती अर्थ रे जिते सबु अछंती अर्थ रे जिते सबु अछंती रेस तांको भितर सबुठु मास्टर रेस बोली. राइट. नाउ we'll move to question number 2. I was not too worried about all this. What does this refer to? Hitler's beliefs or winning a gold medal? कहले मु ए सब को एते I was not too worried. एठी I means Jesuits. से कहजंती एठी this माने कोन आपण बुझुचंती. Here आंसर को लिखा होची ना here this refer to Hitler's belief. Jesuits remained unruffled by the air of German supremacy that Hitler had preached so assiduously. Owens really did not care much about such propaganda. जो एठी this means Hitler कर जो belief थिला से आपको. So ये जमा बदर नथिले ये जो हिटलर कर जो प्रोपागेंडा जो थिला तेणु से कौन करथले he was not worried about all this. Right. Now third is the same question. Why was not Owens worried? Owens काहे की worried नथिले. देखो Owens had worked very hard to 6 years for the Olympics. 6 वर्ष धरी से बहुत हार्ड काम करथिले का पाई ना ओलंपिक पाई. His training had shown results at home. He knew athletic process gets glory, not superficial supremacy. जो कौन सी superficial supremacy किए बड़ो किए सानो ताठू बेसी कौन दरकार ना athletic आपनकर जो खेल रे आपनकर स्किल देवा दरकार ना कि किए बड़ो किए सानो ए सबुरे अछि किए सुपीरियर किए इंफीरियर. नो. Now question number 4. Why did everyone expect Owens to win the long jump easily? काहे कि everyone expect करथले Owens बहुत easily long jump को जीति जिबे बोली. Owens had notched up a spectacular leap of 26 feet 8 and a quarter inches in one of his college meet. This was a world record. Owens based his confidence on his performance. समस्त काहे कि भाबथले इजिल जीति जे बोली कारण ओडे स्पेक्टाकुलर से लॉन्ग जंप रे पाइथले कोन ना 26 फुट 8 एंड क्वार्टर इंचेस गोटे वर्ष पूर्वरु
कोठी ना ताको कॉलेज मीट रे कॉलेज रो यूनिवर्सिटी रो जो खेल होतला सिथरे राइट तेनु समते एक्सपेक्ट करथले कि इजीली जीति जिबे बोली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वाज द सरप्राइज दैट अवेटेड जेसी वेंट्स इन बर्लिन को सरप्राइज जेसी वेंट्स को बर्लिन ने वेट करथिला आंसर हम को लिखुचे ना hitherto German athlete names Lodge Long appeared from nowhere and registered a jump of 26 feet in the long jump trials. Jesse Wentz never knew there was one such competitor waiting to challenge him. This surprised Jesse Wentz. ଯେତେବେଳେ जेसी वेंट्स देखिले सेठारे जणे किए थिले ना जणे जर्मन एथलीट थिले लॉज लॉन्ग हठात किनी फ्रॉम नोवेयर आसिले आउ प्रैक्टिस लीप रे 26 फीट रु ऊर्ध्व डेले राइट ट्रायल रे तेणु एटा तांको पय एको आश्चर्य थिला राइट नेक्स्ट जिबा व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम पीपल अबाउट लॉज लॉन्ग को विषय से लोक मान को कोन सुनिबा को पाइले जैसे got to know that Hitler had deliberately kept Lodge Long away from limelight so that his spectacular show would make other competitors like him nervous. से जानिया पाइले जे नहीं एंकु हिटलर जानी सुनी डेलिबरेटली रखिथिले लॉन्ग को लाइमलाइट रु लोकलोचन रु बाहर रखिथिले बाहर को आनु नथिले लुचेई की रखिथिले सो दैट ए जो तांगर स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस हो अन्य मानकु नर्वस करैबो जेमति जेसी वेंट्स को करैछि Now, question number 7. Do you think Nazis Aryan superiority theory meant that Germans were superior to Negroes? How did ones feel about it? Angry or bothered? See, तमे भाबुछ कि नाजिस आर्यन सुपरियरिटी थियोरी मीन जर्मन माने निग्रो मानकटू सुपरियर आ ओएन याको किभଳି भाबरे फील करथले एंग्री ना bothered so Hitler's assertion of German race superiority over others, particularly the blacks, was born out of his wild xenophobic mindset. It was clearly hopeless and wicked. Owens knew the incipient hostility towards him for his black skin, but chose to ignore it altogether. He was a little bit angry. नहीं? आपण कहबे ना हिटलर कर गोटे ये थिला जस्ट आसेसन थिला कि कोन ना भाबी नथिले कि जर्मन होची सबुटु सुपीरियर से माने गोरा कोला कोला गोरा भेदभाव बहुत थिला कोला मानकु सी छोटो बोली भाबु थिले राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट मेड ओवेन्स डिटरमाइंड टू बीट लॉज लॉन्ग ओवेन्स कोन पाई डिटरमाइंड हेले लॉज लॉन्ग को बीट करिबा पाई सी Jesse Wentz resented Hitler's claim of Germans' race superiority. Instead of protesting against such high-handedness verbally, he chose to rebut it in the tracks using his power and skill. This was the best way to counter Hitler's loathsome attitude to other races, particularly Negroes. Hitler को जो claim थिला superiority theory, right? ये चाहूले ताको तो कथारे भरबाली कहि कि ये करी होबनी ताको कोन करना ताको पावर और ताको स्किल रे बदल रे आमे ताको पावर और स्किल बल रे जिते की खेल रे देखै की हरेबे राइट एटी आपण लिखि दे परिबे कि ये जितिले सेटा दैट वुड ऐड एक्स्ट्रा दिन एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द नाजी सारे सुपरियरिटी थ्योरी से लाइन टे मध्ये आपण लिखि परिबे नाउ यूनिट 2 अगेन यूनिट 2 रो एटी वीडियो अछि आपण माने डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि ताको मध्ये आपण पढंतु आंसर को आसीबा पूर्वरु नाउ यूनिट 2 रो प्रथम क्वेश्चन होछि व्हाट डज अ कोच से अबाउट एन एंग्री एथलीट गोटे एंग्री एथलीट संबंध रे गोटे कोच कोन कहे coaches always ask their trainees to show anger during competition as such feelings undermine their performance सब बेले कोच माने ट्रेनी मान को आंगर को दबे रखिया पे कहती कंपटीशन ने कारण आंगर सब बेले तांको परफॉर्मेंस को हैम्पर करि थाए व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट टू क्वालिफाइंग जंप्स फॉर ओवेन्स प्रथम दीटा क्वालिफाइंग जंप रो रिजल्ट कोन हला ओवेन्स overshot the starting line by nearly 7 inches in his first qualifying attempt. The second jump was also technically wrong.
Owen stood there very worried as he had just one more chance to go to the finals. Owens कौन कले ना प्रथम ये 7 इंच अधिक डेई पले लाइन टू सेकेंड टारे टेक्निकली मध्य रॉन्ग हेले तेणु से पूरा व्यस्त हो गले कारण तांको पाखरे आ गोटिए चांस थिला फाइनल को जिबा पाई. Why did Owens kick the pit? काहेकि गोइठा माइले. Jesse Owens had cooked off his first 2 trial jumps. He was tense and very angry with himself. To vent his frustration, he kicked the pit. प्रथम 2टा ट्रायल जंप रे ऑलरेडी फेल हो जाइथिले बहुत टेंस थिले और एंग्री थिले तांको फ्रस्ट्रेशन बाहर करिया पे जाई गोइठाटे माइले पिट को. Who offered Owens a farm handshake? किए Owens को एक फार्म हैंडशेक ऑफर कले. Was he friendly or hostile? जे माने किछि ये हिसाब रे ना फ्रेंडली करथिले. Lozlong offered Owens a farm handshake. Lozlong, who was surprised Owens with his impressive jump earlier, came up to Owens to shake hands with great warmth and empathy. It was friendly, right? Why did Long speak to Owens during the trials? Did he mean to make friendship with Owens or to find out what was troubling him? Owens काहेकि आसिकी कथा हेले सॉरी लॉन्ग काहेकि आसिकी कथा हेले Owens को सहित ट्रायल रे से फ्रेंडशिप करिया पे चाहुतले ना चेष्टा करतले कोन जानिया पे कोन तांको असुविधा होची. लॉन्ग understood the discomfiture of Owens. He wanted to calm Owens' nerves so that he takes his last qualifying chance successfully and made it to the finals. He appeared genuinely friendly to Jesse Owens. ये बुझी पारथिले लॉन्ग कि Owens को कौन प्रॉब्लम होची से चाहुतले Owens को जो नर्व्स को काम करिया पे काम डाउन करिया पई तेणु सो दैट से लास्ट क्वालिफाइंग जो चांस अछि सक्सेसफुली दे पारिबे और फाइनल को जिबे बोली से जेन्युइनली फ्रेंडली अपियर करथिले कि ना जेसी Owens को पई लॉन्ग राइट. He really looked the part. What does this mean? Does it mean Long was trying to play the part of an Aryan, or he looked as if he belonged to a superior race? से प्रकृति देखा जाउतले से बलिया ता माने कोन दीटा जिंस से कोन सत्र आर्यन बलिया आसे कि तार आर्यन रो पार्ट लिबोतले ना से देखा जाउतले जेमति कि से सुपरियर ये रेस रो बोली सुपर जाति रो बड़ जाति रो बोली. Here Jesse Owens refers to the tall and slim Lozlong was an ace long jumper and his body frame showed it. And से ଗୋଟେ ଭଲ jumper आपण ଏଠି सेकंड ऑप्शन को लिखि परिबे राइट. Now next, how did Lozlong help Jesse Owens qualifying for the finals? केमिति हेल्प कले Lozlong Jesse Owens को फाइनल जंप करिबा पाई. Long had seen how Owens had overshot his starting line in the earlier chances. He told Owens to draw making line a few inches behind the actual starting line so that even if he overshot the start, he would still be not committing an infringement. Being a powerful jumper, the loss of a few inches wouldn't harm Owens in any way. Long देखिथिले प्रथम 2टा जंप केमिति मिस करथिले तेणु याको कोन कहले कि जो लाइन अछि ताटो किछि इंच पछरु टाणीबे और सेठू डेइबे जेहेतु ये जड़े पावरफुल जंपर थिले टिके 2-4 इंची बेसी किछि तांको जो जंप माने क्वालिफाई करिया पे बेसी किछि हैरान हेबा को पड़िबो नाही. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, टुमारो इज व्हाट काउंट्स. व्हाट डू लॉन्ग मीन बाय दिस? काली टुमारो ठीक माने काली रो खेल ही ठीक नहीं. डज इट मीन दैट Owens वुड विन द नेक्स्ट डे और देयर परफॉर्मेंस द नेक्स्ट डे मैटर मत तांको मीन कोन Owens काली जितिबे ता पर दिन जितिबे ना दी जन को परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे जोटा हो सेटा मैटर करे बोली कोटा तांको मीनिंग. सो इठी आंसर रे द फाइनल इवेंट वाज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट डे रे थिला फाइनल इवेंट. Long told that the performance in the finals is all that matter. फाइनल रो परफॉर्मेंस ही मैटर करिवो कि फर्स्ट हो कि सेकंड हो तेणु so qualifying for it was essential for Owens. Both of them could compete then and show off their best. तेणु आज काम हूँ क्वालिफाई करवा तेणु क्वालिफाई करवा बहुत दरकार. जदि आज क्वालिफाई करवा नेक्स्ट डे 2 जणांक जिति पारिबे परस्पर बेस्ट दे पारिबे.
नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एटा होची शेष क्वेश्चन थिला यूनिट 2 रो डिड ओवेन्स क्वालिफाई फॉर द फाइनल जॉब हाउ डिड ही डू दैट ओवेन्स को क्वालिफाई करले कि फाइनल जॉब को जदी करले केमिति करले ओवेन्स heeded Long's advice to start a few inches behind the actual starting line to preclude any chance of disqualification for overshooting the mark. The plan worked and Owens regained his composure and sailed into the finals the next day. Owens Long pro advice नेले किछि इंच परु कोन कले स्टार्टिंग कले आउ जो डिस्क्वालिफिकेशन रो जो येटा थिला सेठु हटि गला से तांको प्लान ठीक काम कला आउ से चांस पाइले कोन ना फाइनल ले जॉब करिबा पाई यूनिट 3 वीडियो बुझाई छि जोटा ताको देखिया पई आपण लिंक यूज करंतु यूनिट 3 रे मात्र 4टा क्वेश्चन हम डिस्कशन करिबा When did Owens and Long realize that they had become friends Long आउ Owens केबे रियलाइज कले कि से माने सांग हेइ सारि छंती Long went out of the way and advised Owens because of which he got qualified for finals Long सबु किछि पछे रखि कि गले एडवाइस कले Owens को आउट ऑफ द वे नॉर्मली लोकडी कोन नाही से हारि जाऊ मु जीति जेबी सेमित न करि कि से निज खेलवार भाव देखाई गले तांको एडवाइस दिले तांको एडवाइस पड़रे ये क्वालिफाई कले फाइनल पाई After this, Owens especially went to Long's room to thank him and there they sat together and talked for 2 hours about a lot of things. When Owens stood up to leave, they both knew that a real friendship had been found. तो जितले फाइनल पे क्वालिफाई करि सारिले तापरे Owens गले लॉन्ग रूम को तांको धन्यवाद जणैबा पाई सेटारे डिस्कशन पाखापाखि 2 घंटा कपि सल्ला परे जेतेबेले फाइनली उठिले जिबा पाई सेतेबेले जानिथिले कि दुई जणाको भलो सांग होई सारिलेनी बोली Now, who was Coubertin? What was his idol? Coubertin किए थिले तांको आइडल कोन थिला Pierre de Coubertin was the founder of modern Olympic Games. से थिले modern Olympic Game रो founder प्रतिष्ठाता. He believed that the important thing in the Olympic game is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. सिद्धा लिखा जाछि बहिरे से थिले कोन ना modern Olympic रो प्रतिष्ठाता से विश्वास करूथिले कि तांको आइडल कोन थिला कि ओलंपिक गेम रे जितिबाटा सब किछि नु एठी टेकिंग पार्ट एठी अंश ग्रहण करिबा होछि सबटु मेन जिंस बा मुख्य जिंस बा इंपोर्टेंट जिंस आ लाइफ रे सब बेले जितिबाटा इज नेसेसरी फाइटिंग वेल भलो भाबरे खेलिबाटा हला नेसेसरी माने लाइफ रे फाइट करिबा हला इंपोर्टेंट Why has Loch Long been called a fine example of Coubertin's idol? काहे कि Loch Long को गोटे Coubertin को idol लो गोटे finest example बोली कहा जाउछि. Long went out of the way and advised Owens when he was disturbed. जेतले Owens disturb थिले ये out of the way हेई सब किछि को पछर पके आगे गले तांकू advice देले. Then in the finals when Long performed well and broke his own past record, though Owens gave his big performance and won the final. Long देखो तांग निजो बेस्ट परफॉर्मेंस देले तांग पास्ट रिकॉर्ड को भांगिले जदियो ओवेन्स जितिले किंतु ये तांकर परफॉर्मेंस बेस्ट देथिले डिस्पाइट ऑफ दिस Long came to Owens and congratulate him ये हारि गले तथापि आसिले Owens को पाकू तांग कांग्रेचुलेट करबा पई this way Long proved to be the epitome of Coubertin's idol एई बडी भाबरे Long Coubertin नो आइडल हिसाब निजको प्रूव करचंती. Now the last question from this topic is what do you think was the greatest Olympic prize for Jesse Owens, the gold medal he won in long jump or the friendship he formed with Loch Long? आपन को हिसाब रे ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी ओवेन्स को पई कोन थिला जो गोल्ड मेडल से जितले लॉन्ग जंप रे ना जो फ्रेंडशिप से फॉर्म कले लॉज लॉन्ग को सहित The friendship with Loch Long was the greatest Olympic prize for Jesse Owens. For this, he himself said that you could melt down all the gold medals and cups I have, and they would not be plating on the 24-carat friendship I felt for Loch Long at that moment. जो रियल फ्रेंडशिप लॉज लॉन्ग को सहित सेटा थिला जेसी ओवेन्स को पाई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज से निजे कहिचंती तांको लाइन रे कि मोर जते मेडल और कप सब को मेल्ट करो से किंतु मोर जो 24 कैरेट फ्रेंडशिप अछि जोरा प्योर सोना 24 कैरेट से 24 कैरेट फ्रेंडशिप
मो जो सांग सहित अच्छे ता ऊपर ये प्लाटिंग ओवर करि परिबो नाही तेणु आम आंसर होची सेकंडटा द फ्रेंडशिप ही फॉर्म विथ लॉज लॉन्ग एंड फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच इटा थिला आपनकर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो बुक रे थिबा प्रत्येक आंसर अपकमिंग डेज रो अदर विषय भी एमती आंसर आसीबो ता सहित एग्जाम रे पढ़ला बेले क्वेश्चन आंसर मध्ये दिया जिवो कीप ट्यूनिंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच हैव ए गुड